हेलो एवरीवन। स्क्रैच स्टडी मैजिक तरफ समस्त को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना। तो यही शुभकामना सहित आम आम चैप्टर को आगे नवा। तो आमर फर्स्ट पार्ट रे जाइतिला न्यूटन को सेकंड नंबर इंपल्स एप्लीकेशन अनेक प्रॉब्लम देथिला। तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइछि, थर्ड लॉ भी ऑलरेडी कंप्लीट हो सारी। फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ कौन थिला भल जानथिला। फर्स्ट लॉ थिला हमरो everybody continues to its state of rest or uniform motion unless it is disturbed by an external force. Second law थिला हमरो न्यूटन का कौन थिला rate of change of momentum directly proportional to applied force and direction towards the force. Third law थिला तो every action there is an equal and opposite reaction. तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ न्यूटन कर ऑलरेडी कंप्लीट हो जाइछि। तो ये जो तीनटा लॉ मोशन रो जो तीनटा लॉ देइसंती न्यूटन, तो सेमानक मध्य न्यूटन का सेकंड लॉ टी होछि रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहा जाय। काहे कि ना इन बहुत क्वेश्चन आछि व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज़ न्यूटन का सेकंड लॉ इज सबटू बेसी इंपोर्टेंट। कारण न्यूटन सेकंड लॉ हमको टेल्स अस हमको दउची कोन दउची ना डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स रो मैथमेटिकल डेफिनेशन दउची F इज इक्वल टू ma एटा दउची हमरो न्यूटन का सेकंड लॉ, जोटा थिला F इज इक्वल टू dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दउतला जार बोले पाउतले ma। तो न्यूटन दउची फोर्स रो डेफिनेशन दउची खाली सेटिक इन। न्यूटन का सेकंड लॉ आउ कोन दउची न्यूटन का सेकंड लॉ दउची जे जो न्यूटन का तीनटा लॉ अछि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ। ए फर्स्ट लॉ टा न्यूटन का सेकंड लॉ भीतर अछि और थर्ड लॉ टा भी न्यूटन का सेकंड लॉ भीतर अछि। तो देखिबा तो केउ पळे भाबरे न्यूटन का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ भीतर अछि सेटा हमें देखिबा। जय जगन्नाथ। ओके, तो हमें बात करिया फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेंट इन द सेकंड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऊपर केउ भली भाबरे अछि देखा। सेकंड लॉ केमते में कंटेंट फ्रॉम द सेकंड लॉ केमते भाबरे पाइबा। तो लिखिबा प्रथम न्यूटन का सेकंड लॉ लिखिया से न्यूटन का सेकंड लॉ रु हम डिराइव करिया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अच्छा न्यूटन का सेकंड लॉ रे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अछि ना देखिबा। देखो अकॉर्डिंग टू Newton's second law of motion, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन रो हम कोन जानि छै F इज इक्वल टू ma। न्यूटन का सेकंड लॉ रो हम जानि छै F इज इक्वल टू ma। ओके, तो हमें कोन करिया F टा को एब्सेंस कर दवा। इन द एब्सेंस F से तले विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, in the absence of external force, that means conde F is equal to 0। external force or absence of that F is not equal to 0 man F टा apply होबो नाही। जदी apply न होला त माने सेकंड लॉ can be expressed as F is equal to ma। Be simple that ma is equal to 0। यदि F टा 0 होला त न्यूटन का सेकंड लॉ रे ma is equal to 0। हमें जाने से दीटा क्वांटिटी रो ओके दीटा क्वांटिटी रो प्रोडक्ट जदी 0 हुए आइ तो दीटा करू गुटे जे कोन से गुटे 0 हेतिबो। बर्तन देखो मास ऑफ द बॉडी तो केबे 0 होबो नाही, सिंस
m is not equal to 0 mass तो 0 होगा नहीं m is not equal to 0 then तो a is equal to 0 देखिए फोर्स टा 0 हो गला absence of external force f टा 0 हला m हो जे 0 since m is not equal to 0 जेतु मास टा 0 होको नहीं तेनो एक्सेलरेशन टा 0 होबो एक्सेलरेशन 0 माने कोन there is no acceleration टा केते बेले 0 होको हमरो काइनेटिक मोशन बा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रे पड़थिबो एक्सेलरेशन केते बेले 0 होबो एक्सेलरेशन केते बेले 0 होबो ना एक्सेलरेशन सेते बेले 0 होबो जेते बेले वस्तुटा कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करथिबो आइदर वस्तुटा रेस्ट थिबो नहले कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव करथिबो तो तेरे पुनी काहे की तो भूली गलेन ठीक আছে देखो acceleration means कोन change in velocity with respect to time change in velocity with respect to time বা rate of change of velocity is called as acceleration अरे ओडिया रे होची परिवेगर हार को त्वरण कहा जाय परिवेगर हार rate of change of velocity is called acceleration but change in velocity with respect to time v by I is equal to v minus u by t सपोज गोटे वस्तुटे जाउची एमती रास्ता रे जाउची एटा लिनियर पाथ रे बर्तन एठी पहुंची एक्सेलरेशन केता हबो सपोज एठी 50 मीटर पर सेकंड जाउची इनिशियल वेलोसिटी एठी मनकर 60 मीटर पर सेकंड जाउची टाइम सपोज लागिची जाम लागू ऑटोमेटिक 50 सेकंड रो टाइम झाला होची तो एक्सेलरेशन केन बार करछे फाइनल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी परिवेकर परिवर्तन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 60 माइनस 50 बाय टाइम जा हो तो 10 बाय 5 50 जा थिबो तो एक्सेलरेशन भाग तो जेतेले वेलोसिटी रे चेंज होउची तो एटी 40 हला 40 माइनस 50 माइनस 10 एक्सेलरेशन प्लस हे पर माइनस हे परियो तो सेतरे किछ इंपोर्टेंट नै जदि वेलोसिटी चेंज हला वस्तु जाउची गोटे बॉडी टे कंटिन्यू रास्ता रे मूव करूची माने तार वेलोसिटी ही चेंज हे चलुची जदि वेलोसिटी चेंज हे चलुची निश्चय एक्सेलरेशन तार क्रिएट होउची ओके तो एक्सेलरेशन के चेंज ऑफ वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन होउची मतलब एक्सेलरेशन केतळे होउनी देखो एक्सेलरेशन 0 केतळे सपोज वस्तुटा एठी अछि 50 मीटर पर सेकंड रे जाउची वेलोसिटी तो 3 सेकंड 3 सेकंड आफ्टर 3 सेकंड एठी जेतळे तर वेलोसिटी देखिबा एठी मध्ये 50 मीटर पर सेकंड रे जाउची दैट इज मींस कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउची कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउची 50 कांस्टेंट माने वेलोसिटी प्रति जगह रे ईच एंड एवरी प्लेस दैट इज वेलोसिटी इज सेम 50 मीटर पर सेकंड 50 मीटर पर सेकंड 50 तो कांस्टेंट वेलोसिटी रे जाउची अरे एटा हम एक्सेलरेशन केमते बाहर करिबा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ला 50 इनिशियल वेलोसिटी ला 50 बाय टाइम समथिंग जाबो तो 0 बाय t 0 तमने देखो ना जेतळे वेलोसिटी ता कांस्टेंट कंटिन्यू गोटे सेम स्पीड रे जाउची सेम वेलोसिटी रे जाउची तो एट दैट टाइम एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी इज 0 गोटे पोजीशन आउ जेतळे एक्सेलरेशन 0 इट्स काइनेटिक पे पडितलो मोशन इन स्ट्रेट लाइन आउ जेतळे वस्तुटा स्थिर अछि रेस्ट कंडीशन रे जेतळे स्टेट ऑफ रेस्ट रे अछि 5 मिनिट पर देखले से रेस्ट हमने u होची 0 v भी होची 0 चेंज इन वेलोसिटी v 0 एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम तो इज 0 तो एक्सेलरेशन केतेबेले 0 जेतेबेले वस्तुटा जेतेबेले बॉडीटा आज एट रेस्ट रे अछि सेतेबेले एक्सेलरेशन 0 बा जेतेबेले वस्तुटा यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी तो जा सबले कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब जाउची सेतेबेले एक्सेलरेशन टा 0 ताले a is equal to 0 means वस्तुटी केतेबेले एटा 0 आइदर वस्तु इज बॉडी इज रेस्ट जेतबेले एक्सेलरेशन 0 और the body is moving uniform velocity केतेबेले जेतेबेले अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हेइनी सेतेबेले एक्सेलरेशन 0 तो दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो सेटा लेके hence thus there is no acceleration since there is no acceleration केतेबेले एक्सेलरेशन न होची
Now, when there is when no force is there is no force acceleration when there is no force is applied. That means no, without any external, that means without any external force, that means without any external force, the body is at is in rest, remain will remain at rest ଥିବା body ସଦାବେଳେ rest ରହିବ and the body is in moving uniformly, and the body is in moving uniformly, sorry, is moving in motion like that. The body is in motion, will move uni will move uniformly, continue uniformly, continue. Okay, and this is the first law of motion. Hence, Newton's first law is contained in the second law. Okay, तो कॉपी करते हैं. तो ଏବେ ଯିବା Newton's third law. Newton's third law is contained in the second law. আমি পড়লে first law টা second law କେମିତି derive ହେଲା ଦେଖିଲେ. ବର୍ତ୍ତମାନ Newton's third law ଟା derives from second law, is contained in the second law. ଦେଖିବା let third law କହିଲେ କ'ଣ ଦିଟା body କି ନବାକୁ ପଡିବ. Okay, let's consider an isolated system. Let us consider an isolated system of two bodies. Isolated system कहले कौन जानिछ. सपोज ये गोटे बॉडी की कौनसी बाहर किसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हबो नाही, तो सेते बेले से सिस्टम टा होजी आइसोलेटेड. और जल्दी बाहर किसी अप्लाई होची तो ताकर रिजल्टेंट फोर्स टा होतबो जीरो, नेट फोर्स टा होजी जीरो. तो आइसोलेटेड सिस्टम अर्थात एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नथिबो. तो लेट्स consider an isolated system of two bodies. कौन कौन ना दे दियो A and let us consider an isolated system of two bodies A and B. ये A ये B, ये परस्पर interact with each other. A and B interact with each other. तो isolated system two bodies A and B interact with each other. परस्पर बाहर किछि एमान ऊपर फोर्स अप्लाई हेउ नै, किंतु एमाने परस्पर भितर गोटे इंटरैक्ट होछन. अर्थात A बॉडी B बॉडी ऊपर किछि फोर्स दउछि, B बॉडी A बॉडी ऊपर किछि फोर्स दउछि. अलर तो सेटा बाहर करे पड़िबो ना. तो सपोज A बॉडी टा B बॉडी ऊपर AB करे फोर्स दउछि, A डायरेक्शन दउछि,
That force name is F क्या ऊपर दउची B ऊपर दउची F B A एटा क्या ऊपर दउची एपटे B बडी A ऊपर गोटे फोर्स दउची F F B A ऊपर दउची B द्वारा ओके वर्तमान लेट F F B F B टा कोन force exerted by B on A ऊपर दउची force exerted by यहाँ द्वारा दउची B on A वस्तु ऊपर B दउची ताले वर्तमान एटी कहबा कहा ऊपर दउची A ऊपर दउची ऊपर हमर बाहर करिया मोमेंटम आउट लिख दो F B A कौन हबो फोर्स exerted by कहा द्वारा दउची A द्वारा on B तो F B होची फोर्स exerted by B on A वस्तु ऊपर फोर्स दउची कहा द्वारा B द्वारा एटा B वस्तु ऊपर फोर्स दउची A द्वारा समझ ले क्या and change in resulting momentum टा लिख दियो derivative of P A resulting momentum the change in momentum of body कहा A कहीं A वस्तु ऊपर की दोची ये दोची A वस्तु ऊपर फोर्स का दोची जे जो वस्तु ऊपर फोर्स तब तो तार ही चेंज इन मोमेंटम डाब ना तार मोमेंटम चेंज हो ए वस्तु ऊपर और जने फोर्स देला तो ए फोर्स टा मूव कला तार वेलोसिटी अछि तार ओटे मोमेंटम बाहरी तो ए मन कर एटा हो जे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बा रिजल्टिंग मोमेंटम ऑफ बॉडी ए सही करी d d by dt dp rate of change of momentum by resulting momentum of body B the resulting momentum of body B उस वाला थी 8 बकया according to Newton's second law बाहर करे third law according to Newton's second law of motion कौन कहबा बीटा को देखिया F F B रो देखिया F B रो देखिया F F B is equal to d by dt कहा पर A पर प्रयोग होची P A and F B A के तो force rate of change of momentum सहित समान सेटा F B A कोन d by dt P B okay equation 1 equation 2 बर्तन कौन करिया now adding two equations now now by adding equation 1 and 2 compare F F B plus F B A is equal to 5 d by dt P A plus d by dt P B is equal to d by dt P A plus P B.
तो आमे कौन करिबा एक्सटर्नल फोर्स जेता हम गोटे नै गोटे आइसोलेटेड सिस्टम नै जे आइसोलेटेड सिस्टम माने देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हबन तो लिखिबो इन द absence of external force any external force in the absence of any external force ଯେତେବେଳେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କୌଣସି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ ହଉନି ତା ମାନେ ଫୋର୍ସଟା ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଯଦି ବଢିଲା ଫୋର୍ସ ବଢିବ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଯଦି କମିଲା ତ ଫୋର୍ସ କମିବ ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ ଲରେ କହିଲେ ତ ଯଦି ଫୋର୍ସଟା ଜିରୋ ହେଲା ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ମୋମେଣ୍ଟମ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଜିରୋ ତ ଲେଖ ଇନ୍ ଦ absence of any external force the rate of change of momentum the rate of change of momentum is zero. That means rate of change of momentum zero means এটা হলো rate of change of momentum এটা হচ্ছে zero d by dt pa plus pb is equal to zero আচ্ছা এটা হচ্ছে কাহার মূল্য FAB plus FBA this implies that FAB vector চিহ্ন দেবো plus FBA is equal to 0 तो FBA টা বার করে নিয়ে যাও FB is equal to minus FBA so this is Newton's third law of motion FAB is equal to minus FB add जाउची ये add होता है परस्पर negative action और reaction are also opposite direction FAB is equal to FBA एटा में न्यूटन को थर्ड लॉ रू बाहर करते हैं so this is Newton's third law hence cos like that Newton's third law is contained in the second law. तो जो है प्रॉब्लम हो गई ना प्रॉब्लम क्या तो हमें प्रॉब्लम ऊपर को जीवा तो प्रॉब्लम ऊपर को जाए तो प्रॉब्लम कौन कहूँ देखिबा the problem was an elevator weighs 4000 kg when the upward tension in the supporting cable is 48000 newton what is the upward acceleration starting from rest and how far does it rise in 3 seconds elevator weights जानिछ लिफ्ट मशीन जो जेतले 5 महला 10 महला 20 महला तले लिफ्ट जाउछ so that is elevator so that is तारा weight होजिबा mass होजी 4000 kg when the upward tension is supporting for a cable तो जाउची लिफ्ट करू तो ताकू गोटे केबल टे टाणी को देखि तो पछ गोटे केबल टे टाणी थिबो तो तार होजी ता फोर्स होजी सपोर्टिंग फोर्स होजी 48000 न्यूटन तो से 48000 न्यूटन रे से कोन करछि टाणुछि टेंशन दउछ ऊपर गुंदी टाणुछि what is the upward acceleration जेतो ऊपर को जाउछि तो acceleration कैसे होछि and how far does it rise in 3 seconds तापर कहछि 3 सेकंड 3 सेकंड रे केते acceleration केबा राइज केते ऊपर को उठुछि त माने कोन बाहर करिया एज टा बाहर करिया हाइट टा बाहर करिया तो लिखो स्टार्टिंग सॉल्यूशन कोन देछि an elevator weighs 4000 kg your mass of elevator weighs is equal to 4000 kg. The M is equal to 4000
केजी आ कौन दोची वेट ऑफ एलिवेटर बाहर कर दियो वेट ऑफ वेट टा कौन बल ये भी गोटे फोर्स जेतु गोटे ऊपर को उठुची तो ता पे फोर्स टा बाहर करिया ता तो वेट होस कौन एम जी एम हैला केते 4000 इनटू जी हैला 9.8 तो आसुची हमर जदी इनटू कर दबा हमर पळे आसीबो 39200 39200 न्यूटन तो वेट बाहर पड़ला तापर आ कोन कहउची देछि गोटे अपवर्ड टेंशन देछि तळु को जो गोटे टाणी की धरुछि केबलटा तो कोन देछि अपवर्ड टेंशन की अपवर्ड टेंशन देछि केते 48300 न्यूटन ओके अच्छा এটা ওটা লাগে तो एटा होची लागी छै एलिवेटर तो आकू केबल द्वारा टाणी छी अपवर्ड टेंशन फोर्स टाणी छी आकू गोटे वेट तळ को टाणी छी W इज इक्वल टू mg ये टाणी छी केते रे हमरो 30 न्यूटन ऊपर केबल टाणु छी 48000 न्यूटन ये तळ को टाणु छी 39200 न्यूटन ताले एलिवेटर टा केते फोर्स रे जाउची पर नेट रिजल्टिंग फोर्स केते बाहर करते नेट रिजल्टिंग फोर्स is equal to T टाणुची अधिक T minus mg is equal to 48000 न्यूटन minus 39200 न्यूटन तो हमर आसी जीव केते माइनस कले 0 बोले 8 okay plus 13 तो मिलेगा 8800 न्यूटन हमको बाहर कर जाछि अपवर्ड एक्सेलरेशन अपवर्ड फोर्स जानि गले अपवर्ड एक्सेलरेशन हम जानि छे F is equal to we know ma is simply that a is equal to F by m ये पहला हमर औटा से पर मास लागते मास 4400 चलिए केजी टू कटिगला ठीक असगरी हमरो 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके तो एक्सेलरेशन बाहर पला 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तापर बाहर करा हाउ फार डज इट राइज इन 3 सेकंड तो s बाहर करिया अब पके तो न्यूटन का तृतीय गति समीकरण s बाहर कर दे हमें जानछे s is equal to ut plus half t square u रो मूल्य एठी केते u रो मूल्य केते जानछो u होची 0 टाइमिंग 3 सेकंड ये छाडी दे रे कैंसिल हो जिवो तो आसे हरि केते काहे u रो मूल्य 0 काहेकी जोटा हम जाउची कंटिन्यू रेस्ट अवस्था रे आसे ना कंटिन्यू जाउची तो u रो मूल्य 0 तो एटा कटि दियो हाफ टी स्क्वायर हाफ ए बाहरला 2.2 टी हला 3 सेकंड 3 into 3 तो कटाकटी करतले हमरा बाहरिबो 9.9 मीटर तो 3 सेकंड रे ये 9.9 मीटर कोन करिवो राइज हेबो ओके पूरी सहित न्यूटन का थर्ड लॉ
जहाँ भी न्यूटन का फास्ट हाँ तो वर्तमान कौन पाइले न्यूटन का सेकेंड लॉ रु फास्ट लॉ पाइले थर्ड लॉ भी पाइले आउ प्रॉब्लम भी जानिले ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁଟନ ସେକେଣ୍ଡ ଲॉ इज कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज न्यूटन सेकेंड लॉ रु फास्ट लॉ डिराइव कले थर्ड लॉ भी डिराइव कले ता विशेष प्रॉब्लम भी गोटे कले एथि सहित सिलेबस अनुसार चैप्टर टॉपिक रो गोटे सरला तो आम नेक्स्ट टॉपिक जीवा मोमेंटम विषय जानथिले तो वर्तमान पढ़िबा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम संवेग संरक्षण नियम तो सेटा बाहर करिया तापर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम कोडी कोडी केमती होची न्यूटन का सेकंड लॉ रे केमती होची थर्ड लॉ रे केमती होची तो वर्तमान कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम लिखि दियो लॉ ऑफ conservation of linear momentum okay law of conservation of linear momentum तो बर्तमान देखो लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम सदा बेले कंजर्व कंजर्व माने सब बेले स्थिर जेते बॉडी रो मोमेंटम था ना काहे तो टोटल लिनियर मोमेंटम ता सदा बेले कंजर्व तो सेटा को प्रूव करा तो तुम लॉटा देखो when no external force acts on a system of several interacting particles suppose what a system n number of particles अछंती बहुत बड़े on several number of particles अछंती आउ एई सिस्टम रे एक्सटर्नल फोर्स किसी अप्लाई करा जाउ ना सेटा गोटे सिस्टम अछि कोन से एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई हेउ नाही तो से कहछि फॉर पार्टिकल सब पार्टिकल मानकर आर गोटे मोमेंटम थिबो आर गोटे मोमेंटम थिबो काहे कि मोमेंटम अछि each and every particle having some masses तो समस्त रोटे मास भी अछि जेहेतु वेलोसिटी भी चलुसंती तो मानकर वेलोसिटी अछि तो मास भी अछि तो समस्त रोटे मोमेंटम अछि p1 p3 p2 p4 pn अप टू n नंबर ऑफ पार्टिकल्स अछंती तो समस्त मासेस अछि समस्त वेलोसिटी अछंती सो समस्त कोन अछि मोमेंटम भी अछि तो से कहछि ए सिस्टम रो टोटल मोमेंटम समस्त मोमेंटम अलग अलग थी पाए कारण समस्त पार्टिकल रो मास अलग अलग तो वेलोसिटी अलग अलग है परबा सेम होई पर जहा भी तो समस्त मास वेलोसिटी अलग अलग बट समस्त मोमेंटम डिफरेंट है पाए बट से कजी टोटल सिस्टम रो मोमेंटम धाउजी टोटल मोमेंटम रो समष्टि बट टोटल मोमेंटम कंजर्व ओके तो से कहछि when no external force acts on a system of several interacting particles सब particles परस्पर रे इंटरैक्टिंग करछन तो से कहछि एमानकर टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ए सिस्टम रो टोटल लिनियर मोमेंटम होछि कंजर्व टोटली कंजर्व का कोन हो ना टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम is considered total linear momentum is the vector sum of the linear momentum of all particles अर्थात total linear momentum ओके तो अब vector sum of p1 p2 vector plus up to pn vector जते सब particles अछंती सब particle मानकर vector sum of momentum is called total linear momentum सब कंसेप्ट हम गोटे सिस्टम रे जते सब पार्टिकल अछंती सब पार्टिकल मानकर परस्पर मध्य इंटरैक्टिंग होसंती बड़े होसंती गोटे बॉल गोटे हांडी भितर 10 बॉल पके दे सब एपट सब खेलेबो तो परस्पर मध्य इंटरैक्टिंग हो तो टोटल मोमेंटम होची कंजर्व बुझला हमें देखिए ओके तो से कंजर्व ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन डिनोमिनेटर हमें प्रथम सेकंड लॉ रु बाहर करिया कंजर्व आ तापर थर्ड लॉ बाहर करिया फर्स्ट बाहर करिया सेकंड लॉ डेरिवेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखो अच्छा हमें कोन नबा जो भीतर आइसो सिस्टम ता नबा जो सिस्टम ता आइसोलेटेड सिस्टम हबो नहीं तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर कोन सी फोर्स प्रयोग नै ता भीतर जो पार्टिकल गुडी अछंती सेमानक भीतर परस्पर इंटरैक्टिंग होछन बाहर किछि फोर्स द्वारा इंटरैक्टिंग होना अंति ता भीतर जते सब अछंती
पार्टिकल गुलो तांको भितर इंटरैक्टिंग होसन परस्पर इंटरैक्टिंग है कि ତା ଭିତରେ ମୋମେଣ୍ଟମ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ତାପରେ ଟୋଟାଲ ମୋମେଣ୍ଟମ ବାହାର କରିବା ତ ଲେଖିବା let us consider an isolated system कौन ना the system on which no external force is applied जो सिस्टम रे बाहर कौन सी फोर्स अप्लाई करा जाउ ना बा तो एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो अप्लाई करा जाउ ना ओके let us consider an isolated system এটা একটা isolated system रे केते पार्टिकल अछंती n number of particles having n number of uh, particles having contents like that having no it contents like that contents n number of particles having masses m1 m2 m3 up to mn ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ରେ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛନ୍ତି ମାସେସ୍ ଜଣଙ୍କର m1 ଜଣ m2 m3 up to mn ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ପାର୍ଟିକଲ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାସ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି m1 m2 and परस्पर इंटरैक्टिंग होसंती मूव करसंती मूविंग विथ वेलोसिटीज v1 v2 v3 up to vn respectively यथाक्रमे ओके कौन बाहर करिया टोटल चेंज इन मोमेंटम बाहर करिया टोटल चेंज इन मोमेंटम बाहर कर टोटल चेंज इन मोमेंटम हला मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल्स लिखबा तो टोटल अच्छा m1 जो है तार मोमेंटम है m1 भी है लिख दो टोटल चेंज इन momentum p is equal to get up m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 plus up to mn vn. This implies that p is equal to m1 v1 होची कोन p1 plus p2 plus p3 plus up to pn. Okay. अति जान पाइलो हमें कौन कले आइसोलेटेड सिस्टम नै छै एक्सटर्नल फोर्स इज 0 देखि दियो if force acting on the system is 0 if force acting on the system is 0 कौन हबो according to Newton's second law of motion कौन जानते second law of motion rate of change of momentum is directly proportional to applied force but F is equal to कौन बात करले dp by dt when force is equal to 0 if force is equal to 0 काहे force 0 तो आइसोलेटेड सिस्टम ना अप्लाई बाहर फोर्स टा 0 थिबो force is equal to 0 then dp by dt is equal to 0 dp by dt कौन थे मोमेंटम रो डेरिवेटिव 0 ए मते को डेरिवेटिव टर्म रे पढिछ काहार डेरिवेटिव 0 सदाळे माने तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0 कांस्टेंट टर्म डेरिवेटिव होची 0 डेरिवेटिव फार्मूला रे कांस्टेंट टर्म रो
डेरिवेटिव 0 कहीं डेरिवेटिव जो x रो पड़छ डेरिवेटिव x टू द पावर n nx टू द पावर n minus 1 एटा x अछि बट यदि कांस्टेंट टर्म रह गला डेरिवेटिव ता होछि 0 अच्छा dp by dt is equal to 0 त माने dp by dt p रो डेरिवेटिव 0 ता माने दिस मींस दैट मींस p ता होछि कांस्टेंट p is constant and constant term derivative होछि 0 and p is constant if p is constant ये भी constant this means that p1 plus p2 plus p3 plus up to pn is constant हमने हमर समस्या टा होछि constants एते कोन बाला in the absence of external force on by cause in the absence of external force total change in momentum linear momentum total change in linear momentum without any external force total change in momentum is conserved okay that's the derivational law of conservation of momentum second law सॉरी जायछि परवर्ती चैप्टर रे देखिबा परवर्ती क्लास रे देखिबा derivation of law of conservation of linear momentum from Newton's third law of motion भलरे प्रैक्टिस कर दो लॉन्ग क्वेश्चन टा थर्ड लॉ ऑफ मोशन रो हमें कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम टा हम कोन करबा डिराइव करबा तो से तरह होची टिल देन बाय बाय टेक केयर गुड डे